Good morning to all of you. Good morning. Good morning. Okay. So we are going to continue the same topic, the last topic, the education policy in British India. That's a very important topic. So now we are going to discuss the remaining aspects of this topic. And here, in last class, I have discussed with you one main idea, and what was that? That is Wood's dispatch. We have already discussed it. Wood's dispatch, and the year of this Wood's dispatch was 1854. That is one of the most important topic. And this Wood's dispatch is also known as Magna Carta. इसको हम क्या कहते हैं? This is known as Magna Carta for the English education in India. So this you can write. This can be important for your exam. Wood's dispatch. The provisions of Wood's dispatch are known as Magna Carta for education system in India. Magna Carta. Why we are calling it Magna Carta? Due to its importance. Clear? And why it is more important in comparison to the previous development? Because it made the education system more systematic. Education system को क्या किया? It made the education system more systematic. ज़्यादा systematic बना दिया. It made it more organized. Clear? And it also repudiated the old downward filtration theory. Okay, so it was not 100% practically implemented, but still it is important. अगर आपने पेपर पे भी कुछ रिफॉर्म्स कर दिए तो वो रिफॉर्म के डायरेक्शन में पहला कदम तो होता ही है, right? So here what happened? The downward filtration theory was reversed. It was reversed at least on paper. At least on paper. Okay. The network of schools and colleges I've already discussed. So this is important or not? Yes, this is important. That's why this is known as Magna Carta. Now you have to borrow one idea from in the next topics that I am going to discuss. Clear? This model will further do what? It will further become better. पहले से इससे क्या होगा? Better होगा. New features will be added, but the structure will remain the same. ठीक है ना? इससे सिस्टम आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा? Obviously, a little bit progressive. Clear? So इसी structure पे हमें आगे provisions को add करते हैं. That we have to do now. Okay? So the next topic in this series in last class I have already discussed with you that there was a revolt of 1857, and after this there was a fundamental shift in the administrative policies of British in India. Clear? Now what they want to do? Okay, they want to prevent outbreak of any such revolt in future. So they will introduce many administrative reforms. Got it? And what was happening during this time? Wood's dispatches in the year 1854. Raja Ram Mohan Roy, active कब? 1828, Brahma Samaj. He died in 1833. Now what happens here? Raja Ram Mohan Roy was active, and when Raja Ram Mohan Roy was active, Raja Ram Mohan Roy के बारे में मैंने क्या बताया? Father of Indian Renaissance. He was having a more mature reaction or a synthesized approach of what? Mixing East plus West. और ब्रिटिश पॉलिसी सबसे पहले क्या थी? याद करो, बिफोर 1813 व्हाट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी? Promotion of Orientalism. यही था ना? Clear? It was not basically a policy. It was, you can say that at individual level, it was being done, but the company was not allowing Christian Muslims to come, and they were promoting Orientalist groups in India. Raja Ram Mohan Roy was not happy with this. Raja Ram Mohan Roy make demands before the British government that you should not do this. You are promoting only Orientalism. This is not good. You should promote what? Western education also. ये किसकी डिमांड थी? राजा राम मोहन रॉय कि केवल ओरिएंटलिज्म को प्रमोट करने से काम नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल राजा राम मोहन रॉय एज द फर्स्ट मॉडल. बहुत बड़ी बात. यू आर टॉकिंग टू प्रमोट western education. You are making this demand from the British government. So government was already in pressure because the socio-religious reform movement have started in Bengal. Okay, and now the people were making demands that it's government duty and responsibility to promote education in India.
It's government duty or responsibility to bring legislations in India so that the social and religious evils could be checked. ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की. अब गवर्नमेंट को क्या करना है आफ्टर 1857? इंडियंस को अपीज भी करना है. अच्छा, अपीज करने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है, पॉलिसी मेजर्स. क्लियर? कि आपको एक मैसेज देना, कन्विंस करना कि इन इंडिया द क्राउन रूल इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन. और क्राउन ने क्या कहा था 1858? क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन 1 नवंबर 1858, क्लास में बताया आपको मैं. What was the declaration of proclamation of Queen Victoria? That Indian subjects will be treated like British subjects. There will be no any discrimination between Indian subjects and British subjects. ठीक है, भारतीय प्रजा और ब्रिटेन की प्रजा में कोई भेदभाव नहीं होगा. क्राउन विल ट्रीट बोथ ऑफ देम इन अ सिमिलर मैनर. वादे सच हैं या झूठे हैं? कल अमेरिकन रिवॉल्यूशन बताया था मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में. झूठे है ना, राइट? सो दिस वाज द प्रॉमिस, बट एटलीस्ट this promise will be visible on paper. Paper पे तो ये promise visible होना ही चाहिए. Now the next development in this aspect is Hunter Commission, जो मैंने last class में शुरू किया था. So I have just given a recap. Now we are going to start from Hunter Commission and its recommendation. This topic, Hunter Commission 1882, submitted its report in 1883. So in books, both these years have been written. 1882 and 1883. ये दोनों ही years होते हैं. हंटर कमीशन. ओके, नाउ हंटर कमीशन के बारे में एक और बात मैंने बताई थी कि लॉर्ड रिपन वाज द वायसराय, और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो दोनों अमरीश पुरी नहीं है. ठीक है, दोनों के कुछ अचीवमेंट्स हैं. देयर आर सम इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स. दोज एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स मैं अलग से डिस्कस करूंगा. ठीक है, यहाँ पे बस इतना बता के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज वैसे हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे. ऑलरेडी ये टॉपिक चलने वाला है 6 आवर्स. ठीक है, मतलब आज और कल दोनों दिन कंटिन्यू होगा. ओके, सो लॉर्ड रिपन हम छोड़ रहे हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइड. ठीक है ना, स्लाइड से डिस्कस करते हैं. और सारे स्लाइड का कंटेंट नहीं नोट करना है, और स्लाइड भी नहीं डाउनलोड रखना है, किसी काम नहीं आता ये डाउनलोड. Write the key points from the slides, develop a good understanding, and why which method I follow while teaching you will know when I will discuss with you Rabindranath Tagore model of education. I follow that. ठीक है, कि भीड़ भाड़ में शिक्षा नहीं होती, टीचर को अलग रहकर स्टूडेंट के साथ काम करना चाहिए. गांधी सेज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर टीचर. मदर टीचर का कॉन्सेप्ट क्या है? द टीचर्स मस्ट बी लाइक मदर्स. स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द स्टूडेंट्स नॉट विल नॉट बी एबल टू लर्न बेटर. आर एन टैगोर कहते हैं ये बुक्स वगैरह के कलेक्शन से और ये प्रसाद वितरण कार्यक्रम से, नोट से कुछ नहीं होने वाला है. टीचर शुड प्रोमोट व्हाट? डिस्कोर्स एंड डिस्कशन इन द क्लास. आइडियाज आपके पास आए, फिर उन आइडियाज के एसेंस को, क्रक्स को क्या करना है? आपको नोट करना है. गॉट इट? ओके, सो ऑल दिस आई विल डिस्कस विद. ओके, एंड यू विल आल्सो नो कि क्या एजुकेशन का रियल पर्पस होता है. ठीक है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जैसे वी हैव मेड सो मेनी एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी? दैट वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन इन आवर सोसाइटी. यही तो प्रॉब्लम है. हमारे पास क्या है? गाइडेड मिसाइल्स बट men are misguided. Okay, you see the crimes. And the second irony of the society is that in globalization and this age of consumerism, what we are doing, okay, we should love with the humans, okay, and use the goods for our needs, for fulfilling our necessities. And now what we are doing, we are loving the goods and using the humans. ठीक है, वस्तुओं से प्यार करने लगे हैं और आदमी का, इंसान का उपयोग करने लगे. ठीक है, ये हो चुका है. ठीक है, सो दिस ऑल वी विल एबल टू लर्न व्हेन विल डिस्कस गांधी एंड टैगोर. तो वहां तक इंतजार करिए, पहले ये प्रोविजंस फिनिश करता हूं, देन आई विल डिस्कस गांधी एंड टैगोर. देखो उस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया, विश्व भारती मेंस में भी क्वेश्चन आया. क्लियर? सो दिस शुड बी कंप्लीटेड इन द डिस्कशन इटसेल्फ. तो आप रिलेट कर पाओगे, वर्धा को रिलेट कर पाओगे गांधी के व्यूज के साथ. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, तो एक एक चीज को आप रिलेट कर पाओगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कमीशन, दैट इज हंटर कमीशन. क्लियर? So starting from the very important fact for the information. So here I have already discussed with you year of this Hunter Commission. You all know about the year of this Hunter Commission. Year क्या है Hunter Commission का? 1882. 1882 is the year. Clear? And what was the task of this Hunter Commission? So already there were recommendations of Wood's dispatch.
वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशंस तो पहले से ही फ्रॉम 1854 itself, ठीक है, एंड दीज रिकमेंडेशंस वेर अप्लाइड आल्सो, ये रिकमेंडेशंस क्या हो चुका है, अप्लाई भी हो चुका है. नाउ दिस कमीशन वाज गिवन अ टास्क दैट इट हैज टू डू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. इस कमीशन को क्या करना था, एक इंक्वायरी करनी थी और इन्वेस्टिगेशन करना था. किस बात की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, ध्यान से समझो. वुड्स डिस्पैच में बात की गई थी प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को आपने रिवर्स किया था. और जब वो करोगे तो आप एजुकेशन ऑफ द मासेस की बात करोगे, और जब आप एजुकेशन ऑफ द मासेस की बात करोगे तो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरफ आप बढ़ोगे. तो हंटर कमीशन को ये काम दिया गया कि भाई जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मॉडल और नेटवर्क तैयार किया गया है, ये कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है, ये रिव्यू करो आप. This was the task given to the Hunter Commission, that it had to examine or investigate the primary and secondary education. Okay, what is the status? What are the challenges before this primary and secondary education in India? And if the government is making a commission which has to submit its recommendation on how this, okay, education system, this is what mass education system, mass education system, how it's functioning, primary and secondary education of India, how it's functioning. तो जब भी आप प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हो तो आप मास एजुकेशन की बात कर रहे हो. इट मीन्स गवर्नमेंट हैज अगेन emphasized that our focus or commitment is what, on the promotion of mass education. मैं कॉलेज से तो लोग नाराज हो गए थे ना 1835 के बाद, आज हम लोग भी नाराज हैं. 15 अगस्त को स्पीच देते हुए मैकॉले को दो चार गाली दे ही देते हैं, ठीक है. तो मैकॉले से तो उस समय लोग ज्यादा नाराज थे, ताजा ताजा नाराज किया था मैकॉले ने लोगों को. तो गवर्नमेंट बार बार ये चीज एम्फेसाइज कर रही है कि हमारा फोकस कहाँ होता चला जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन की तरफ होता चला जा रहा है, ठीक है. This is the promise of the government. Now what we see is that these are the concepts that I have already discussed with you, that after 1857 what was happening, that the East India Company administration was ended. Now who will handle the administrative activities, or you can say that who will be the ruler of India, that will be the crown. Basically East India Company is replaced, but the entire structure will remain the same. Official तो वही रहेंगे ना, कंपनी का सीईओ बदल जाएगा, बस इतना हो रहा है. The missionaries were greatly disappointed with the government policy. अब मिशनरीज को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, इवेंजेलिकल्स को. गवर्नमेंट क्या कर रही है, वी विल प्रोमोट मास एजुकेशन, थोड़ा वर्नाक्युलर्स पे भी ध्यान देंगे, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स ओपन करेंगे, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स ओपन करेंगे. अब मिशनरीज के पेट में दर्द शुरू हो गया. क्रिश्चियन मिशनरीज आर नॉट हैप्पी दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी. ये नहीं होना चाहिए. एजुकेशन प्लस बाइबल, याद है ना आपको, दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी. अब जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच ठीक किया तो किसने अप्रोच शुरू कर दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने. क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्टेड एन एजुटेशन, ओके, एंड फॉर्म द जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन लंदन, ठीक है ना, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज आर नॉट हैप्पी. नाउ दिस जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ओके, एक और बात यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, that before 1858 what was happening, 1813 से 1857-58 के बीच में प्राइमरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मास एजुकेशन को प्रमोट करने का जिम्मा किसने लिया था, क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिया था. याद रखो, कंपनी के स्ट्रक्चर से अलग, मैंने कहा था द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ओपनड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज वर नॉट रेगुलेटेड बाय द कंपनी. वो क्या थी, ऑटोनोमस थी. So the mass education system that was promoted by the Christian missionaries in India was at that time decentralized. वो decentralized था. Christian missionaries were looking after this. अब आप बताओ कि 1858 क्या है. 1858 is what? 1858 what the government did? It centralized all the powers in its hand. The crown did what? It centralized all the powers in its hand. Now the government will come with the education policy, and the government will look after the promotion of the mass education also. And that's why the Christian missionaries are not happy. Now what we see, a General Council of Education was formed, okay, and this General Council of Education, okay, requested Lord Ripon. Lord Ripon was the viceroy at that time, that Lord Ripon should do inquiry into the Indian education system. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, इसकी इंक्वायरी करो.
और टाइम टाइम पे करवाते रहते थे इंक्वायरी। मेरी बात समझ गया ना? नाउ व्हाट हैपेंस, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड अ कमीशन, that is Indian Education Commission. The name of the commission was Indian Education Commission on Feb 1882, and William Hunter was the chairman of the commission. Okay, that's why we say it Hunter Commission. But the original name was what? Indian Education Commission under the chairmanship of William Hunter. Write this. Indian Education Commission. This is the original name. William Hunter is the chairman under the chairmanship of William Hunter. Year is 1882. We don't need to remember the month. Month याद नहीं रखना है, ठीक है ना? Year आपको याद रखना है. Now we are coming forward. Okay. Now what was the objective here? Okay. देखो, Woods dispatch 1854. इसको क्या करना है? You will have to review it. You will have to re-examine it. Okay. The progress or the position of primary education in India. You have to review it. You have to re-examine it. ये पहले ही आ चुका है Woods dispatch. And if any reforms are needed, you have to give recommendation about these reforms. Clear? Then, to inquire into the position of the state institutions and their importance, to evaluate the work of missionaries in the field of education. This also needs to be evaluated because there were many allegations over the Christian missionaries. बहुत सारे आरोप थे that Christian missionaries, in the name of promoting education, what they are doing? They are promoting Christianity. So the commission will do what? Commission will investigate the role of Christian missionaries. अच्छा, जो रिपोर्ट आएगी कमीशन क्या कहेगी कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया के लिए बहुत बुरी हैं या अच्छी? They will say that Christian missionaries had great achievements in the field of education. भैया कमीशन कौन बना रहा है? मेंबर कौन है? सब तो अंग्रेजी है ना, ठीक है? तो ये जो कमिटी कमिटी हम खेलते हैं यही से तो सीख के आए ना. They will make commission that we are doing what? We are doing an inquiry into the role of Christian missionaries. Okay. Now it will also inquire the government attitude towards private enterprises. याद करो in Wood's dispatch, what was the point? That the government will give support or government will encourage those private individuals who want to set up educational institutions, who want to help, who want to come forward, who want to donate land, who want to donate their buildings. ठीक है, तो उनको भी सपोर्ट करेंगे. तो ये भी एक मतलब अप्रोच था कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंटरप्राइजेस यहाँ पे क्या और बेटर हो सकता है. ओके, सो दिस वाज द टास्क दैट वाज गिवन टू हंटर कमीशन. इट इज वेरी इजी. पहले जो भी हमने वुड्स डिस्पैच में पढ़ रखा है, इसका एसेंस क्या होगा? वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन वुड्स डिस्पैच, हियर there was the need to review and re-examine that model कि उसमें क्या necessary improvements हो सकते हैं. Now this Hunter Commission will give its recommendations about the development of primary education. हमेशा याद रखना, हंटर कमीशन का मेन फोकस क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन और प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ऐसे टेक्निकल चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती है, बट जब आप पूरे टॉपिक को एसेंस को डिस्कस करोगे तो भूलने के चांसेस नहीं होंगे एग्जाम में, अदरवाइज वी विल फॉरगेट. ठीक है, वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर नोट्स जो होते हैं ना कि की पॉइंट्स हैं, तो आप उसको रटते रहते हो और एग्जाम में क्या हो जाते हो? भूल जाते हो. जहाँ उसकी जरूरत होती है एग्जैक्टली वहीं भूल जाता है. ठीक है, बाकी समय याद रहेगा, तो ऐसा नहीं करना है. नाउ दीज आर द डिफरेंट एरियाज. ओके, these recommendations or discussions suggestions can be divided into these 6 groups. Now I will discuss one by one and I will give you the essence of the topic. For example, policy. Okay, what is the policy suggestions? So point 1, primary education should be regarded as the instruction of the masses. It should be closely related to the practical aspect of the life of the masses. ये कैसे होगा प्राइमरी एजुकेशन? हाउ इट विल बी रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ मासेस? जब हम प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाक्युलर्स का यूज करेंगे. गॉट इट? ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? जब आप प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाक्युलर्स के को यूज करोगे, then the child will be able to develop his personality or her personality. The same was said by whom? Gandhi also. The same was said by whom? R.N. Tagore also. Okay, so the government is saying here that okay, it will be related, the primary education should be what? Should be related to the practical aspect of the life of masses.
Primary education means we are talking about what? Instruction of the masses, or whenever we are talking about primary education, we are talking about mass education. Clear? So if you want to develop all aspect of a child, okay, if you want to develop a kind of practical aspect, okay, in this education system, so obviously what should be done here? Medium of mother tongue. Mother tongue is what? Vernaculars. Vernaculars. It means vernacular should be with the medium at the primary level. Okay, vernaculars medium is important. Okay, and that's why. Plus, the third recommendation is what? That the government should give more help and support to the primary education than before. पहले से ज़्यादा help और support करना चाहिए primary education को, right? Now, the next important point, okay? In selecting persons of appointment to the government post of a lower order, preference should be given to the candidates who can read and write. This point. It means in the matters of employment, if the government is giving job opportunities, clear, and if the government will give preference to even for the lower post, that we will appoint those who can read and write. So this will do what? Okay, this will encourage the people. They will try to learn, they will try to read, they will try to write. तभी तो लोग पढ़ेंगे ना, जब उनको सामने क्या दिखेगा? एक फ्यूचर दिखेगा. If we will be able to read, if we will be able to write, then we can join the services. So this is one idea that the government should do this. That if you are joining any service, even the service of the lower order, you must be able to read and write, and this will encourage and motivate Indian people to get education. And primary education should be focused in backward districts also, especially in those areas inhabited by the aboriginal races, to be expanded by the Department of Education through liberal grant in aid. It is saying that, okay, for marginalized class also, that are far away from the urban settlement, the tribal people, we should also try to educate these people. हमें इनको भी educate करने की बात करनी चाहिए. अब नाउ ये पूरी बात हो गई ना. नाउ व्हाट इज द क्रक्स? इस पूरी पॉलिसी रिकमेंडेशंस का क्रक्स क्या है? मास एजुकेशन को प्रमोट करना. दूसरा क्रक्स क्या है? प्राइमरी एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए. तीसरा क्रक्स क्या है? कि प्राइमरी एजुकेशन पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में किसको यूज करना चाहिए? विच लैंग्वेज यू शुड यूज? वर्नाक्यूलर. तो कहाँ रट्टा मारने की बात है? क्योंकि इसके पहले वुड्स डिस्पैच में प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई. यहाँ ये कह रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन पे गवर्नमेंट पहले से ज्यादा फंड दे, प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाक्यूलर्स को प्रमोट करे, मास एजुकेशन पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए. ये हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन. 1882 में कमीशन बनी, 1883 में रिपोर्ट आ गया. किसने अपॉइंट किया था? रिपन. तो कुछ रिपन का इम्पैक्ट रहेगा कमीशन पे, ऑब्वियसली. सारे रिकमेंडेशंस आपको बहुत ही शानदार दिखेंगे यहाँ. अब देखो क्या है, दूसरी बात क्या है. जब मैं आपको रिपन और मेयो पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं पढ़ा रहा, तो आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को कैसे डेवलप किया इन्होंने, म्यूनिसिपल बॉडीज को कैसे डेवलप किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप करने में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, यहाँ पे बस उसका एक हिंट है, और वो हिंट क्या है? ठीक है, मेयो ने आधा काम कर दिया था. यहाँ क्या हो रहा है? द कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन should be handed over to district and municipal board. प्राइमरी एजुकेशन का कंट्रोल किसको दे देना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड को. इससे ये क्या हो जाएगा? ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा. ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव फंक्शनिंग हो जाएगी इसकी. दिस इज द पॉइंट. डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड. एंड व्हेन आई विल डिस्कस द टॉपिक, okay, Lord Mayo, Lord Ripon, I will discuss with you that कैसे, which kind of reforms were initiated by Mayo and Ripon. तो district और municipal board के reforms भी इनसे जुड़ जाते हैं. Got it? The second point is what? Local board. Local board. Okay, and they will deal with this primary education system. Okay, finance, management, expansion, inspection, all this will be done by the local boards in that local area. तो यहाँ पे इम्फेसिस क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन को आपने किससे जोड़ दिया? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, लोकल बोर्ड से जोड़ दिया. गॉट इट? ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जैसे आगे चल के हमने पंचायत का कॉन्सेप्ट क्यों लाया, पंचायत को राइट्स क्यों दिए? क्योंकि वो उस नीड्स को, रिक्वायरमेंट को बेहतर ढंग से समझते हैं कि कहाँ फाइनेंस चाहिए, कहाँ पे क्या पैसा खर्च करने की जरूरत है. सो दिस इज द आइडिया हियर कि प्राइमरी एजुकेशन का कंट्रोल किसको दे दो? डिस्ट्रिक्ट और
म्यूनिसिपल बोर्ड को दे दो, लोकल बोर्ड के को दे दो, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या फाइनेंसेस, क्या रिक्वायरमेंट है, पैसे को कहाँ स्पेंड किया जाना है, what are the challenges, what are the requirements, where funds to be spent, they can decide it in a in an effective manner. Okay, so this is the needed thing, needed approach. Now the third part, encouragement of indigenous schools. Clear? The commission, again district and municipal board, Indians would be more sympathetic to the indigenous school than the education department and recommended for the work of indigenous schools. Okay, local schools or the indigenous schools. Clear? It has two meaning. First, the school set up by the okay individual persons in a particular village, in a particular locality. This is also the meaning of indigenous schools. Schools promoting vernaculars is also the meaning of indigenous schools. Okay, this was done. Okay, standard of same standard of education should be maintained throughout the whole state, and this was an attempt to bring uniformity in the education system. ठीक है कि भाई अगर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, पेपर है, ये सब पूरे स्टेट में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. सो दे ट्राइड टू ब्रिंग अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आल्सो. अब इसमें फंसना नहीं है. कितने कोर आइडियाज आपके पास दिमाग में आए? यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल कोर आइडियाज पे वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. क्या क्या कोर आइडिया, फिर से क्या कोर आइडिया है आपके दिमाग में? प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा वर्नाक्यूलर्स, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन किसको देना है, म्यूनिसिपल बोर्ड, लोकल बोर्ड. बस ये कोर आइडिया है, बाकी सब तो यूं ही लिखा हुआ है. आपके नोट्स में इतनी चीजें होनी चाहिए, अब आप आसानी से याद कर पाओगे. नाउ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये कहाँ ही एग्जाम में पूछेगा, ऐसे ही है. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ schools, there are some recommendations that ये सब लिखना नहीं. School houses and furniture should be simple. The manager should be free to choose the textbook for their schools. उनको इस मामले में autonomous होना चाहिए. School hours and holidays should be adjusted according to the local needs. Instruction in primary schools should be simplified. Practical subjects like arithmetic, account, mensuration, elements of natural and physical sciences, agriculture, health should be introduced. Okay, native games and exercises should be introduced for the physical development of students. कुश्ती उश्ती कबड्डी वड्डी खिलाओ लोगों को, तो इससे फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी. नाइट स्कूल शुड बी अब एस्टैब्लिश्ड वेयर एवर नेसेसरी. कितना शानदार प्रोविजन है शानदार प्रोविजन है. गांधी और टैगोर भी तो यही कहेंगे आगे चल के, बट वहां पे गांधी और टैगोर वाला पॉइंट हमें याद रहता है, हंटर कमीशन को हम भूल जाते हैं. आर दीज रिकमेंडेशंस गुड और नॉट? यहाँ पे कहीं आपको कमी नजर आ रही है क्या? स्कूल का मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से बुक होंगे, है ना, जो हॉलीडेज हो वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जा सके. गॉट इट? ओके. बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट की बात है, बच्चों को साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को सिखाने की बात है. नाइट स्कूल्स की बात कर रहा है हंटर कमीशन. तो हंटर कमीशन विलन की तरह तो नहीं लग रहा है ना, अब विलन की तरह नहीं लग रहा है. बट लास्ट में मैं एनालिसिस बताऊंगा, कंक्लूजन बताऊंगा, तो आप बेटर समझ पाओगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, what is the next part of recommendation? Training of teachers. ठीक है. Normal schools should be established for the training of primary school teachers. ठीक है. और ये टीचर ट्रेनिंग की बात सबसे पहले कौन करता है? नेपोलियन, फ्रांस में, नेपोलियन कोड में बताया आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग स्कूल फॉर द टीचर्स. ये नॉर्मल स्कूल क्या होगा? टीचर ट्रेनिंग स्कूल. ठीक है, ये चीजें हैं. फाइनेंस की बात क्या है? ओके, तो देखो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड को ये जिम्मेदारी दे दो, तो वो क्या करेंगे, एक सेपरेट फंड रखेंगे, एंड दिस सेपरेट फंड इज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ primary education. District and municipal board, they will maintain a separate fund, and this separate fund will be used and utilized for the growth and development of primary education. इसके बाद what about the provincial government? Provincial government should grant 1/3 of their total expenditure to the development of local bodies. Provincial government अपने 1/3 एक्सपेंडिचर को कहाँ खर्च करेंगी? डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज. और लोकल बॉडीज का काम क्या हो जाएगा? एजुकेशन को मेंटेन करना. लोकल बॉडीज फंड का एक हिस्सा कहाँ खर्च करेंगी? एजुकेशन. एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, एडिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड मेट फ्रॉम द लोकल फंड. जो लोकल टैक्सेस जनरेट होंगे उससे क्या किया जाएगा? सारा एजुकेशन का खंड जो फंड है इसको मैनेज किया जाएगा. अच्छा, सुन के आपको क्या लगा? लगा ना कि बहुत शानदार रिकमेंडेशन.
ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, आपने अपना बोझा उठा के दूसरे के सर पे रख, एक लाइन में बताओ क्या किया आपने। 1857 के रिवोल्ट के बाद अगर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो लोग किसको दोष देते, क्राउन को दोष देते। गॉट इट। क्राउन ने क्या किया, काउंसिल एक्ट लाए, दैट आई विल डिस्कस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। काउंसिल एक्ट क्या है, द स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, काउंसिल एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे आपने एजुकेशन की जिम्मेदारी किसके कंधे पे डाल दी, लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड। बट क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरी तरह से लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के हाथों में था, नहीं। क्या फाइनेंसेस के लिए ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, वेर दे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट विद रिगार्ड टू द फाइनेंसेस, द आंसर इज नो। देयर वर मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस थे। इवन यू विल सी द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दैट वर फॉर्म्ड इन 1935, okay, they faced a lot of challenges. The provincial governments that were formed by the act of government of India Act 1919, they faced a lot of challenges. ठीक है, आज भी you will find that the local bodies face a lot of challenges. So how you can expect कि इनको जितना पैसा खर्चा करना है इनको इनके पास मिल ही जाएगा, and if the system will not function better, what will happen, okay, what the British government will say, ये जिम्मेदारी तो आप ही की है, फंड कहाँ से ले आने हैं, लोकल रेवेन्यू, टैक्सेस, इनसे क्या होगा, लोकल बॉडीज के पास फंड आएगा। तो अगर प्राइमरी स्कूल इज नॉट फंक्शनिंग बेटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज लाइक ट्रांसफरिंग योर बर्डन ऑन द शोल्डर ऑफ अदर्स। क्लियर, ऑन वन साइड दिस इज कॉलोनियलिज्म, यही होता है कॉलोनियलिज्म। क्लियर, ब्रिटिश नीड व्हाट, मोरल वैलिडेशन फॉर द प्रेजेंस इन इंडिया, they need moral validation for their presence in India, that we are in India to, for we are in India as the liberators, और इंडिया में हम इसलिए हैं ताकि इंडियन लोगों को क्या हो, बेनिफिट। मेरी बात समझ गए। और ये देख के अच्छा खासा आदमी कंफ्यूज हो जाए कि ब्रिटिश इंडिया में क्यों थे, लगेगा यार सही में ये लिबरेटर्स थे, ठीक है, 100-200 साल और रूल कर लिया होता तो कितना मजा आता, ये फीलिंग आने लगेगी, ठीक है ना। सो दे डिजाइन द पॉलिसीज इन सच अ मैनर, बट स्टिल we can say that it was progressive, ठीक है ना, it was more progressive than the Woods Dispatch 1854। था कि नहीं, वुड्स डिस्पैच प्रोग्रेसिव था कि नहीं, मैकॉलेज मिनट से तो ज्यादा ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ आपने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को क्या किया, ठीक है, उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। Hunter Commission is better than the Woods Dispatch 1854 because Woods Dispatch 1854 laid the foundation, उसने एक बेस तैयार किया और उस फाउंडेशन को और बेहतर बनाने का काम किसने किया, हंटर कमीशन ने। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेवलपमेंट, मेजर रिकमेंडेशंस। I have already discussed all the important part. Now, secondary education, there are important recommendations about the secondary education also. Clear? So the core ideas I hope you have got. Okay, some important recommendations about the secondary education also. And what is that, the government should gradually withdraw itself from the field of secondary education. अब समझ में आ रहा है पॉलिसी, the government should withdraw itself from the field of secondary education, and सेकेंडरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसको दे देनी चाहिए, इफिशिएंट प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दे देनी चाहिए। अपना बोझ किसी और के सर पे डालने की तैयारी है, गवर्नमेंट शुड विड्रॉ। ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट शुड सैंक्शन ग्रांट इन एड टू improve secondary education, that the government should provide some funds, okay, to promote secondary education। clear? and अब इसमें देखो मॉडल क्या है, that the government will maintain some secondary schools, plus the task of maintaining secondary schools should be given to the other enterprises also। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी होंगे लेकिन बहुत सारे स्कूल्स प्राइवेट इंटरप्राइजेस के होंगे। नाउ द गवर्नमेंट शुड मेंटेन सम सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, एटलीस्ट वन मॉडल हाई स्कूल इन वन डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? वेयर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया हो। बाकी स्कूल्स में हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस की। एंड टू इंकरेज द प्राइवेट इंटरप्राइज, द कमीशन सजेस्टेड दैट द मैनेजर्स ऑफ एडेड स्कूल्स, एडेड स्कूल्स आज भी सुना होगा आप लोगों ने,
आप लोगों के साथ किसी के यहाँ होगा भी एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्लियर? सो द एडेड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट यही है कि गवर्नमेंट विल गिव यू अ फंड, you will manage, right? And that will be what? Government aided school. ठीक है? तो aided schools might charge less fee in comparison to the neighboring government school. ठीक है ना? तो ये सारे के सारे concepts यहाँ पे आते हैं. But what is the essence of this entire discussion? That the government is doing what? Transferring its responsibility of giving education. Clear? On the shoulders of the private players. Clear? Transferring its responsibility to the municipal board to the local board. ठीक है? वो उस responsibility को क्या कर रहा है? Transfer कर रहा है. Now for qualitative improvement, there are many such recommendations. Clear? For example, curriculum at the secondary stage should be bifurcated into A course and B course. ये लिखना नहीं है. This will not be needed. Okay? A course prepared for the students who go for the higher study in the university, and B course should be practical type of course that will prepare them from commercial and non-literary studies. यही बात तो गांधी कहते हैं, पर्पसफुल एजुकेशन. गॉट इट? ऐसा नहीं है कि गांधी और टैगोर नहीं कहा, ये लोग भी बड़े बुद्धिमान. दे आर सेइंग व्हाट? ए कोर्स एंड बी कोर्स. बी कोर्स मीन्स व्हाट? प्रैक्टिकल एजुकेशन, skill based education. That is what? B course. Got it? A course और B course की बात की, and what is this B course? This B course is practical education, skill based education. That was the B course. Clear? Then the commission did not refer to the use of mother tongue as the medium of instruction at the high school stage. यानी कि प्राइमरी स्कूल में क्या होना चाहिए? मदर टंग. बट हाई स्कूल और इसके बाद जो हायर स्टडीज में जाओगे तो यहाँ पे मदर टंग वॉज नॉट रिकमेंडेड एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन. सो वॉज द प्लान ऑफ एंग्लिसिजाइजेशन स्टिल कंटिन्यूड? यस और नो? यस. हाई स्कूल में क्यों नहीं हो सकता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्नाक्युलर्स या लोकल लैंग्वेजेस? दे आर सेइंग दैट प्राइमरी लेवल पे रहेगा, बट हायर लेवल पे, हायर सेकेंडरी पे या फिर higher studies mein, the medium of instruction will be English. So did the British have give up their plan of Anglicization? No, they are still trying to subjugate Indian culture, Indian language, Indian education system for the for promoting the needs of Britain. And this is colonialism. What is colonialism? When one nation's interests are subjugated to the another nation interest. Okay, one nation interests are subjugated. For example, India's interests are subjugated for the for promoting the interest of the parent country, that is Britain. And when we talk about the interests, what could be these interests? So these interests could be political, administrative, economic fields, education, say social, culture, religion, everything will be subordinated. सबको subordinate किया जाए. This is the basic idea here. Now, new universities were set up as a result. Hunter Commission कब है? 1882. Okay, and what we see, Punjab University and Allahabad University were set up in the year 1882 and 1887. हालांकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट ही 1883 में आई, but this we can relate that the Hunter Commission and Punjab University and Allahabad University were set up as a result. Now, the next part is Indian Universities Commission. Okay, in 1902. Okay, and this commission submitted its recommendations, and the recommendations became an act, and that is known as Indian Universities Act of 1904. Clear? Now we have to discuss Indian Universities Commission and Indian University Act. Now, who was the Governor General or Viceroy here? कौन था? ये तो बड़ा आसानी से आप गेस कर सकते हो. गुड, लॉर्ड कर्जन. और कर्जन किस बात के लिए डिटरमाइंड था? कर्जन वॉज डिटरमाइंड टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया. वी ऑल नो दिस. कर्जन टुक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन. कर्जन ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिया था. एंड व्हाट वाज दैट डिसीजन? डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. वी ऑल नो दिस. नाउ दिस टाइम this Indian University Commission has been formed, okay, as a result of recommendations of Lord Curzon. Clear? And what was the purpose? Okay, so this commission was given the task that it will submit its recommendation for the reforms in university education system in India.
Okay, reforms in university education system. आप एक बात बताओ कि at this point of time, okay, between 1900 and 1905, the growth of nationalist sentiments were high or not? Yes. After the formation of Indian National Congress, clear, we can say that that was an organized expression of consolidation of nationalist feelings and sentiments of the Indian people. ठीक है ना? तो वो नेशनलिज्म बूस्ट हो रहा था. ओके, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स वर बीइंग प्रोमोटेड. और किसी भी रिवॉल्यूशन का आधार क्या होता है? यूनिवर्सिटी कैंपसेस, कॉलेज कैंपसेस, यही होता है ना. सो व्हाट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू? The government will try to increase its control over the universities. Clear? So what they are, what the commission is asked to do, to give the recommendations, okay, about the university education in India, and the chairman of this commission was Thomas Raleigh, and that's why this commission is also known as Raleigh Commission. So always remember, this can be asked in exam, that Raleigh Commission was related to, you will say education, because the same Indian University Commission is known as Raleigh Commission. Now, members of this commission, write the names. This kind of question now UPSC is asking. It has not been asked, but they can ask it. Sayyid Hussain Bilgrami, write in notes. Okay, Indian Universities Commission, chairman was Raleigh, Thomas Raleigh. Write this. This is an important fact. This question is still unexplored. UPSC ने अभी तक पूछा नहीं है, but पूछ सकते हैं इसको. In future there are chances. Raleigh Commission, right? Other members: Sayyid Hussain Belgrami, right? Sir C. Sankaran Nair, and Justice Gurdas Banerjee. These are the three other members. Okay, Raleigh plus three other members. It means Indian members are also incorporated. Right? Important fact. Important fact. Raleigh plus S. H. Belgrami, C. Sankaran Nair, and Justice Gurdas Banerjee. Justice Gurdas Banerjee. Now, we are coming to the next part. Recommendations of the Commission. Regulations for reformation of university senates in Indian universities. Greater representation of affiliated colleges in the senates. Stricter monitoring. अभी देखिए, देखो काम वाला प्रोविजन आ गया अंग्रेजों. What is this? Stricter monitoring of affiliated institutes by the universities. अब यहाँ पे जब stricter monitoring आएगा, तो university will do what? Strictly monitor the affiliated colleges. It means what is happening? Administrative control is centralized or decentralized? Centralized. The government is tightening its control over the university and the affiliated colleges. And what was the basic purpose or objective? The basic purpose or objective was to suppress the growth and development of nationalist feelings and sentiments among the Indian people, because universities were the center, epicenter, okay, for the promotion of such ideas. Now, recommendations for reforms of school education. Curriculum reforms at the universities. Recommendations on education and examination research, as well as student welfare and state scholarship. But what was the main purpose? देखो, जितने recommendations आएंगी सब 100% अप्लाई हो जाएंगे क्या? नहीं. मेन पर्पस क्या है? This is the main purpose. Okay, centralization, okay, increasing, okay, administrative control over the universities and the colleges. Clear? At the time of Karjan. But still we will say that yes, the recommendations were progressive for the university system, but this was the hidden agenda. ये agenda था. This is colonialism. Why controversy over recommendation? This we need to understand. ठीक है ना? Controversy क्यों है recommendation पे? That is the very important point. Okay, I have already told you that the government is tightening control over the university system of education. Centralization. Okay, different circulars were issued from time to time. पढ़ोगे आप Cunningham circular and all this. Clear? And the students were forbidden to take part in the popular mass movements. तो एक तो point वहां से जुड़ जाएगा. And the next point is that, okay, now what is happening?
okay, that there was a growing nationalist sentiment in British India, and a number of colleges and institutions of higher education had risen in the metropolitan suburbs, which were linked to the major universities of Calcutta, Bombay, and Madras. What does it mean? Calcutta, Bombay, and Madras, three presidencies. There are universities here. अब छोटे छोटे शहरों में क्या खुल गए हैं? कॉलेजेस. और ये सारे कॉलेजेस किससे लिंक है? इन यूनिवर्सिटीज से लिंक है. लेकिन नेशनलिज्म का ग्रोथ धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है. और छोटे छोटे शहरों के जो कॉलेजेस हैं वो सेंटर बनते चले जा रहे हैं नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए. तो क्या करजन को ये जरूरत महसूस होगी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या करना चाहिए? इन एफिलिएटेड कॉलेजेस पर अपने कंट्रोल को और ज्यादा सेंट्रलाइज करना चाहिए. दिस इज वन पॉइंट. Clear? Now the second point is this: these set their own curriculum, and the recommendations of the commission were seen as measures to de-recognize and regulate indigenous institutions will fall into disfavor of the Raj. This point is very important. समझो इस बात को. जैसे मान लो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, and there are many colleges which are affiliated to, okay, Calcutta University. Suppose in a district there is a college, and that college has become the center of nationalist activities. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? करिकुलम या नियम कानून किसी ना किसी चीज का बहाना लेके उस कॉलेज का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है, उसके प्रिंसिपल को भी हटा सकती है, उसके स्टूडेंट्स को भी क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. तो लोगों ने कहा कि ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट के लिए, ये टूल बन गया है. इट हैज बिकम अ टूल, एंड बाय यूजिंग दिस टूल द गवर्नमेंट कैन डू व्हाट? The government can de-recognize. De-recognize मतलब किसी भी कॉलेज की मान्यता को खत्म कर सकती है. एंड इट कैन रेगुलेट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस which fell into the disfavor of Raj. इसका मतलब ब्रिटिश रूल को जो अपोज कर रहा है, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ब्रिटिश रूल को अपोज करते समय सेंटर बन चुके हैं, ईपी सेंटर, ठीक है, जो अड्डा बन चुके हैं नेशनलिस्ट एक्टिविटीज का, है ना, उनको क्या किया जा सकता है? डीरिकॉग्नाइज किया जा सकता है या उनको रेगुलेट किया जा सकता है इस एक्ट की मदद से. इससे भी लोग नाराज थे. दिस इज ऑल्सो वन रीजन. ठीक है. Despite strong and sustained opposition from Indian populace, the recommendations were enacted by Curzon and Indian University Act 1905. The people were opposing it कि Indian University Act को लागू मत करो, लेकिन कर्जन ने लागू किया. क्यों किया? क्योंकि कर्जन वॉज डिटरमाइंड टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया. ठीक है. When I will teach you Curzon, I will teach you the other administrative reforms initiated by Curzon. और एक डिसीजन कर्जन ने और लिया आगे जाके, कहा यार ये यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, सीधे क्या कर देते हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है इसी को तोड़ देते हैं. एंड दैट विल बी द कर्जनियन मिसकैलकुलेशन. कर्जन वहां गलती कर जाएगा और उस गलती की वजह से एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट विल स्टार्ट, एंड विच विल बी द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया नोन बाय द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. तो आप समझ पा रहे हो कि कॉलोनियलिज्म में any policy which the British government will introduce, it will have its own hidden objective. उसका एक hidden objective होगा. ह्यूमनिज्म का मास्क पहन के वो आएगा, बट वो किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा? नॉट इंडियन इंटरेस्ट. इट विल प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्लियर? सो दिस एजुकेशन सिस्टम which the British colonial historians claim that in India we developed a kind of education system, and we should be given credit for developing this system of education in India. कि अगर हम 100-200 साल रुक गए होते हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान और आगे बढ़ जाता. क्यों आगे बढ़ जाता? अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भूल गए, क्या कर रहे थे? ठीक है. 1947 तक ही तो तुमने एक कंट्री को दो कंट्री बना दिया, और रुक जाते तो पता नहीं क्या करते. ओके. सो दिस इज व्हाट कॉलोनियलिज्म. यही है कॉलोनियलिज्म का फेस. क्लियर? तो मेनी अ टाइम्स वी थिंक दैट एक्सप्लॉइटेशन केवल इकोनॉमिक था. नहीं. In colonialism, the exploitation was economic, the exploitation was administrative, the exploitation was political, the exploitation was social, cultural exploitation, and this is what? Education. Education के फील्ड में भी आज क्या हो गया है? आज की सोसाइटी में जैसे आप देख रहे हो कि यूथ जो है, हमने खुद देखो, हमने क्या किया? अपने एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को एनरिच करने पे काम नहीं किया. ठीक है. कहाँ किया उसको?
आज जो एजुकेशन सिस्टम है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को हम प्रमोट कर पा रहे हैं क्या? नहीं. एजुकेशन विदाउट वैल्यू. दैट्स व्हाई आई सेड दैट मिसाइल्स आर गाइडेड टुडे एंड द मेन आर मिसगाइडेड. इंडिया की कल्चर की सबसे खास बात रही है डिसिप्लिन. मेरी बात समझ गया ना? डिसिप्लिन, इतना ज्यादा डिसिप्लिन कल्चर है कि लोग उस डिसिप्लिन को फॉलो करते करते कास्ट रिजिडिटीज तक में फंस जाते. इतना ज्यादा डिसिप्लिन कि एक टाइम में अनटचेबिलिटी था, और जो शूद्रास थे, ओके, दे यूज टू रेस्पेक्ट द अपर कास्ट पीपल. They used to accept whatever the tortures and humiliation they are receiving, in the belief that if they will react, okay, this is against, okay, the established and beliefs of our religion, कि अगर हमने कुछ भी आवाज उठाई इनके खिलाफ तो ये पाप हो जाएगा. इट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ सिन. एक 50 साल का शूद्र व्यक्ति 5 साल के ब्राह्मण बच्चे के सामने खाट पे नहीं बैठता था. क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज फीड हो गई थी कि भाई क्या है, ये हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा है. हालांकि ये गलत था, इट वॉज नॉट करेक्ट, बट स्टिल द पीपल वेयर फियरिंग फ्रॉम व्हाट? सिन. कमिटिंग सिन. कि अगर सिन करेंगे तो इसका भुगतान हमें क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा इसी जन्म में. ओके, तो सोचो, बिना किसी पुलिस सिस्टम के, ठीक है, कहीं ना कहीं इस जो रिलीजियस बेस्ड ऑर्डर था, इसने क्राइम्स को काफी हद तक कम कर रखा है. अच्छा बताओ, हम साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ अगर कल्चर को भी उसी तरह से आगे बढ़ाते, कल्चर से जो मतलब ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स उनको बाहर निकाल देते, कम्युनिटी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको हम आगे बढ़ाते, है ना, तो सोसाइटी में वायलेंस अपने आप कम हो जाता. दिस आई विल डिस्कस इन द टॉपिक गांधी. So got this idea? This is what Indian University Commission. Now the third point is Sadler Commission, and this is Sadler University Commission 1917 to 1919. Sadler Commission. This is also one of the most important topic, Sadler Commission. Okay, तो देखो 1917 a commission was constituted. यहाँ पे names नहीं है, हाँ नाम लिखा हुआ, लिख लो, write the name. The chairman of this University Commission was, the name of the chairman was, right, Dr. M.E. Sadler. Dr. M.E. Sadler. He was the chairman. Dr. M.E. Sadler was the chairman. And right, other members. Dr. M.E. Sadler was the chairman. यहाँ पे लिखा हुआ है M.E. Sadler. He was a British educationist and historian. Here, M.E. Sadler. And write other members. Other members. यहाँ पे other members names are also important. This area is unexplored. यहाँ से भी यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है. So they might ask the question, right? Okay. The name of two Indian members. केवल Indian members का नाम लिख लो. In Sadler Commission, the name of two Indian members. The name of two Indian members. One was, right, Ashutosh Mukherjee. Sir Ashutosh Mukherjee. One name was Sir Ashutosh Mukherjee. Ashutosh Mukherjee. And the second is Dr. Ziauddin Ahmed. The second is Dr. Ziauddin Ahmed. Ashutosh Mukherjee and Dr. Ziauddin Ahmed. ये लोग भी इंडियन एजुकेशनिस्ट थे. और यहाँ पे सैडलर भी क्या है? इंडियन एजुकेशनिस्ट. आशुतोष मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के. और बंगाल की धरती इतनी फर्टाइल थी इंटेलेक्चुअलिटी के मामले में. यहाँ आशुतोष मुखर्जी का मैं एग्जांपल दूंगा. दुनिया की कोई ऐसी बुक नहीं थी जो आशुतोष मुखर्जी के पास नहीं. फ्रांस में, लंदन में, यूके में, रशिया में कहीं भी कोई नई बुक पब्लिश होती थी तो वो सबसे पहले कहाँ आती थी? आशुतोष मुखर्जी के पास. He spent his entire wealth in collecting the books. There was not a single book that was published in any part of the world that was not available with Ashutosh Mukherjee. तो जब नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता की आपने सुना होगा, जब वो बनी तो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया आशुतोष मुखर्जी की फैमिली से, उनके बेटों से, कि आपके पापा के पास जो बुक्स हैं वो हमें दे दो, नेशनल लाइब्रेरी में रखना है. उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे बुक. फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में बातें चली, फिर लास्ट में एक डिसीजन ये हुआ कि ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी में आशुतोष मुखर्जी की बुक का कलेक्शन रखा जाएगा, बट पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ. ठीक है ना? आशुतोष सेल उसमें एक अलग से होगा, वो सारी बुक्स वहां रखी जाएंगी.
और अगर आप वहाँ विजिट करते हो तो एक दिन में वहाँ सिर्फ पढ़ सकते हो बैठ के, आके बुक नहीं ले आ सकते आशुतोष सेल से। बहुत होगा तो आप 5 पेजेस मैक्सिमम एक दिन में फोटो करवा सकते हो या फोटो ले सकते हो, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो इतना कलेक्शन था किसके पास, आशुतोष मुखर्जी के पास। वाई बंगाल बिकेम द सेंटर फॉर द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर बंगाल क्यों बना, ऐसे लोग थे बंगाल में, आशुतोष मुखर्जी इज वन ऑफ देम। सो सैडलर वाज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी आल्सो एन एजुकेशनिस्ट, Ziauddin Ahmed also an educationist. Got it? So this is Sadler Commission, right? Sadler Commission. And now this commission will give recommendations. Clear? Recommendations. What are the recommendations? Okay. The task was to investigate the condition and progress of education in India and to make recommendations for the improvement. Simply कि अब तक इंडिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम है इसको आप स्टडी करिए, ओके, रिव्यू करिए and then give suggested recommendations here. Now, what was the objective? I have already discussed. Evaluation, examination, evaluation of the examination system, assessment of finances, recommendations for reforms. All this was the task of this Sadler Commission. Clear? Sadler Commission did its task, submitted its report. The report is known as Sadler Report, and the report was submitted in the year 1990. So 2 years. It took how many years? 2 years. और इस रिपोर्ट में क्या है, दिस रिपोर्ट कंटेन्ड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया एंड मेड सेवरल रिकमेंडेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। रिकमेंडेशंस में क्या क्या थे, सो दैट एसेंस हैज बीन रिटन हियर इन दीज रिकमेंडेशंस। वन फोकस वाज टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी था। सेकेंड इज व्हाट, improving the curriculums. The third is what, establishment of new schools and colleges, expansion of the infrastructure, expansion of vocational education, and reforms in the examination system. These are the core recommendations. So write this recommendation part, core recommendations. What are the core recommendations? Clear? Core recommendations were, केवल core points लिखो, okay? Enhancing the capacity of the teacher training institution, or enhancing teacher training, enhancing the capacity of teacher training institution, okay? Improvement in the curriculum, improvement in the curriculum, right? Enhancing the capacity, improvement in the curriculum, establishment of new schools and colleges, establishment of new schools and colleges, expansion of vocational education, expansion of vocational education, and reforms in education system, expansion of vocational education, reforms, okay, in the education system, ठीक है। और भी टेक्निकल डिटेल्स इसके बहुत सारे हैं, आई एम नॉट एंटरिंग टू द डिटेल हियर, गॉट इट। नाउ राइट, यू कैन write one point here, that this most of the recommendations of this commission were accepted, right? Conclusion part is important, right? Most of the recommendations of this commission were accepted. Most of the recommendations of this commission were accepted. Most of the recommendations of this commission were accepted. Most of the recommendations of this commission were accepted. And now I will discuss one most important fact with you, and that is most of the recommendations were accepted. ये यहाँ नहीं है, okay, but you can write here. एक fact लिख लो. It's not written here. I am discussing. Write this fact. Right, between 1916 to 1921. This is an important fact. Between 1916 and 1921. Between this period, 1916 and 1921, right? 7 new universities were established. 7 new universities were established. 7 new universities were established. A बहुत important fact. 1916 to 1921, 7 new universities were established. दो का नाम आपको पहले से पता है. Tell me the names. बता चुका हूँ in the class. Between 1916 to 1921, 7 new universities had been established. Exactly 1916. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी what was the year? 1920. तो दो तो आपको पहले से पता है, राइट? बनारस,
अलीगढ़, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ, मैसूर, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ, मैसूर, पटना, लखनऊ, मैसूर, पटना, पटना, ढाका एंड ओस्मानिया, OSMANIA, ओस्मानिया। तो 7 हुए ना, ये 7 न्यू यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश। ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज बीइंग डन। ठीक है, सैडलर कमीशन बना तो वैसे 1917 में था और BHU 1916 में आ गया, बट यू विल से दैट 1920 में अलीगढ़ तो है ही है। तो एक रेंज हो गया, दिस इज द रेंज ऑफ द टाइम, बिटवीन 1916 to 1921 7 such new universities were established. Now tell me one thing, new universities that were established, already there were universities, there were schools and colleges. Do you think that these centers will emerge as one of the most important centers for the promotion of mass movements in India? Yes or no? Yes. यूनिवर्सिटी बनने से कैंपस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज हो जाएगा। फिर उस स्टूडेंट को ट्रेन करना, नेशनल मूवमेंट में लेके आना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार के बच्चे हैं, साउथ इंडिया से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। अब जैसे ही उनको किसी बात के लिए आप पॉलिटिकली अवेयर करते हो, तो दैट अवेयरनेस इज रीचिंग ओनली टू द दिल्ली और टू द एरियाज ऑल्सो फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, टू द एरियाज ऑल्सो फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, क्योंकि वो सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चे नहीं, दे आर अंडर ग्रेजुएट्स और द ग्रेजुएट्स। ओके, so they will become what? Okay, they will become, you can say that the most important promoters of the nationalist ideas. ठीक है, तो ये जो 7 न्यू यूनिवर्सिटीज बनी हैं, क्या ये एक रीजन हो सकता है गांधीयन नेशनल मूवमेंट में रिमार्केबल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स? यस और नो? Gandhian mass movement, first Gandhian mass movement, that is also known as first great mass movement of Gandhi. What was the time period? 1920 to 1922. So these new centers of education which are being developed here, okay, will also be one reason for the remarkable participation of the students in Gandhian movement. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात, this is also one of the most important. Now the next part of development I am going to discuss with you, that is very important. But before discussing the concept, okay, I will draw a simple sketch here. The details I will discuss later in constitutional development, but यहाँ पे एक basic concept समझने की जरूरत है. So with the help of board work we will try to learn that. And what is that? Okay, so look here, we have discussed about Sadler Commission. Sadler Commission, to draw this sketch, ऐसे प्रीलिम्स के आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे. Sadler Commission we have already discussed. 1917 submitted its report in 1919. Got it? And with the same, okay, with the same, in the same year, what we see, Act of 1919 was introduced. Act of 1919 was introduced. Clear? And in this Act of 1919, by this Act of 1919, okay, what we see, that there is a very important development. And what is that development? Act of 1919 से क्या आएगा? बताओ. Diarchy. Now I am asking a simple question. Diarchy in provinces or diarchy in center? Act of 1919 will do what? This is an important prelims question. Diarchy in province or diarchy in center? In provinces. Very good. It means provinces में क्या आ जाएगा? Diarchy, not in center. Not in center. ठीक है? और यहाँ पे क्या है? Provinces में diarchy आने का मतलब क्या है? It simply means that यहाँ पे center, this is province, center and province. Province means state. जैसा आज हम state कहते हैं. Now we see list system. और list system में क्या है? Central list, state list and concurrent list. ठीक है? It means that the state list are the subjects where this is also known as PL, provincial list. It means provincial governments, okay, is having a list that is known as provincial list or state list.
and there are subjects enumerated in this list. इस लिस्ट में सब्जेक्ट दिए हुए हैं. In constitutional development I will discuss this in detail. इस प्रोविंशियल लिस्ट में क्या है? स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है जिसपे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना सकती है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरकी? अगेन दिस लिस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ओके, प्रोविंशियल लिस्ट को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट में. द लिस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन पार्ट विल बी कॉल्ड रिजर्व लिस्ट and the second part will be called transferred list. Reserved list and transferred list. मेरी बात समझ गया ना? अब इसमें रिजर्व लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स में किसकी मोनोपोली बनी रहेगी? रिजर्व लिस्ट. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट डायरकी. ठीक है, कि मैंने क्या किया? लिस्ट डिवाइड किया. सेंटर के पास ये पावर है, स्टेट के पास ये पावर. स्टेट पावर में स्टेट सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, रिजर्व एंड ट्रांसफर. क्लियर? एंड दिस इज इन दिस वे द सेंटर विल ट्राई टू एस्टैब्लिश इट्स मोनोपोली इन इट्स प्रोविंसेस आल्सो. ऑन वन साइड दे आर क्लेमिंग दैट हमने प्रोविंसेस को राइट्स दे दिए हैं. दिस इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बट इट्स नॉट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एट ऑल बिकॉज देयर इज द प्रोविजन ऑफ डायरकी. तो ये प्रॉब्लम था. डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस and this was highly criticized also. Diarchy was highly criticized also. Now look here, 1919 Act and the provision of diarchy. What we see here, the period of diarchy, okay, on the basis of Act of 1919, okay, so it will be in effect from 1921 to 1937. Diarchy effect में. Clear? And what we see that the education system in India is passing through a transition stage, and it was a time of reform, it was a time of resistance, and it was the time of laying down a framework that would influence the country's educational landscape for decades to come. Why I am saying that this is important? Because it is also the period of first great mass movement of Gandhi. One of the most important legislation is Act of 1919. 1919 is going to do what? It is like the future constitution of India. So this is the time that India needs reforms. We were fighting to ensure what? Swaraj. ये वो समय है, हम इन सारी चीजों के लिए लड़ रहे हैं. Obviously, what we see is that this will also put a pressure on the government. Act of 1919 marked a significant step. It introduced diarchy system I have already discussed, in which the Indian provinces has some provincial list, and in this provincial list a dual government structure was introduced. It means क्या हो जाएगा? Reserved and transfer. This is what? Dual government structure. Certain subjects including education were categorized as transferred and placed under the control of Indian ministers accountable for legislative council. ध्यान से समझना, एजुकेशन को किसमें हमने डाल दिया? ट्रांसफर्ड में. और ट्रांसफर्ड वाला काम किसको देखना है? इंडियन मिनिस्टर्स को. नाउ टेल मी वन थिंग, एजुकेशन इज अ टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? यस और नो? एजुकेशन इज अ टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? आज के टाइम में इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आल्सो वी यूज टू क्रिटिसाइज आवर गवर्नमेंट कि एजुकेशन में थोड़ा और काम होना चाहिए, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है. हम खुल के कह पाते हैं ना इस बात को, और गवर्नमेंट इस बात को पॉजिटिवली लेती है. द गवर्नमेंट ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम. क्लियर? एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? The task of responsibility was given to, okay, was put under transferred list, given to Indian ministers. यानी कि अब प्रोविंसेस में अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो दोष ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं होगा. किसका होगा? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स का, इंडियन मिनिस्टर्स का. वही कहानी, अपना बोझ किसी और के सर डाल दो. अच्छा, एजुकेशन में आप काम अच्छा तब कर पाओगे ना जब आपके पास फंड आएगा, और फंड का पूरा कंट्रोल किसके पास था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. जो कितने होशियार थे वो, अब आपको पता लगा. एक्ट ऑफ 1919, दे आर वेरी स्मार्ट. टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ कहा कि यस वी आर ब्रिंगिंग इंडियन एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. देयर इज मिनिस्ट्रीज, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज. Provincial ministries will look after the task of Indian education system. So if Indian education system will not function better, whom do you criticize? British government or your Indian government? Indian government. So British government has successfully made a buffer. एक बफर बना दिया, और वो बफर कौन थे? इंडियन मिनिस्टर. सवाल ये उठता है कि
क्या फंड्स जितना चाहिए वो फंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज कर रही थी promotion of Indian education in India? The answer is no. They were not releasing those funds. उन funds को release नहीं कर रहे थे. Okay? Now, in this system, what will happen? The educational reform. ये मामला अटक जाएगा कि नहीं? It will suffer from a lot of obstacles or not? ठीक है? आप कहोगे हमें फंड दे दो, सामने वाला फंड रिलीज नहीं करेगा. ठीक है? मेरी बात समझ गया ना? So this will create a lot of obstacles. Now financial constraints were foremost with limited resources allocated to the education sector. Administrative resistance. What I have written here? Administrative resistance. It played a significant role as the colonial bureaucracy was not always in the favor of changes that were proposed by the Indian ministers. इंडियन मिनिस्टर्स अगर अपना ओपिनियन रखते थे तो कोई ना कोई बहाना लेके क्या करते थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको रिजेक्ट कर देते थे. ठीक है, तो पूरा माहौल कहाँ का बन गया, नहीं नाम लूंगा, अब आप समझ गए होंगे. ठीक है, ठीक है. नाउ additionally there was a lack of consensus among the Indian leaders on the direction of education policy, further complicating the matter. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. ठीक है, मामला अटक गया. टू सेंटर ऑफ पावर, दिल्ली वाले मजे थे. ठीक है ना, दिस वाज हैपनिंग हियर. ओके, 19 एक्ट. ओके, नाउ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स and limited budgets. Okay, there is no need to enter into the details. I have already discussed everything. मेरी बात समझ गया ना? What are the problems with the Act of 1919? Clear? Now, these are the problems with the Act of 1919. Okay, 1921 to 37. This was a critical juncture in the development of education in India. It was a critical juncture. I have already discussed it. ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए what happened here, सैडलर कमीशन was formed. ठीक है ना, सैडलर कमीशन को एक इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया था और वो टास्क क्या था, दैट कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में देयर वर सम प्रॉब्लम्स, so the task was to review those problems, but the recommendations that will be given, these recommendations will be applied to the other universities as well. So write this, Sadler Commission mein write point 1. Point 1, write this. The main task of Sadler Commission was to study and give report. The main task of Sadler Commission was to study and give report on the problems of Calcutta University. The main task of Sadler Commission was to study and give reports on the problems of Calcutta University. But, okay, but the recommendations were applied on other universities as well. But the recommendations here were applied on other universities as well. The recommendations were applied on other universities as well. Recommendations were applied on other universities as well. Got it? Right, next point. Okay. अच्छा, इसका रिपोर्ट कब आया? 1919 में. And 1919 Act Montagu Chelmsford Reforms also comes in 1919. So right, next point. The report of the recommendations were submitted in 1919. The recommendations were submitted in 1919. Right, next point. Act of 1919 will appear. Act of 1919 will appear. केवल की पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ठीक है ना. Act of 1919 will appear. Right, next point. Diarchy was introduced in the provinces. अब आप रिलेट कर पा रहे हो ना? Without writing too much, now you are understanding the theme. Diarchy was introduced in the provinces. Right, next point. Education was put under the transferred list. Education subject was put under the transferred list. Education system was put under the transferred list. इसको कहाँ रखा गया? Transferred list में. Right, next point. It means the responsibility now was on the shoulders of the Indian ministers or the provincial legislatures. Right now, the responsibility to promote education was on the shoulders of provincial legislatures, especially on Indian ministers. Provincial legislatures, especially on Indian ministers. Especially on Indian ministers. Clear? Responsibility now lies on the shoulders of the provincial legislatures, especially on Indian ministers. Right, next point. Okay, but the Indian ministers were not free to do
allocation of funds for education. Now the Indian ministers were not free to do. Now the Indian ministers were not free to do allocation of funds for the education. They were not free to do allocation of funds for the education. Right. Next point. Okay. Deadlock. Okay. At many times. Okay. Deadlock between British administrators and Indian ministers were seen at many times. Deadlock between British administrators and Indian ministers were seen. The deadlock between British administrators and Indian ministers were seen. Clear? And this deadlock became the reason for the obstruction. And this deadlock became the reason for the obstruction. And this deadlock became the reason for the obstruction for the development of education in India. And this deadlock became the reason for obstruction of the development of education in India. Got it? समझ में आया आपको? आसान है? Is it easy? अब भूलोगे नहीं. क्वेश्चन बहुत आसान होगा. सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, उसमें कोई पॉइंट आ जाएगा. एजुकेशन सिस्टम, डायआर्की, प्रोविंसेस, विच लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट. तो अब ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, द कंटेंट विच यू आर राइटिंग इन नोट्स, जो कीवर्ड्स आप लिख रहे हो, की सेंटेंसेस लिख रहे हो, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. बट आपको ये चीजें तभी याद रहेंगी जब आप पूरी डिबेट को समझोगे. गॉट इट? Until unless you don't understand the entire concept, you will not be able to retain these facts or the informations. हम इसको एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं ले जाएंगे. अगर आपने नहीं समझा तो आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना पड़ेगा. और एग्जाम के पहले क्या क्या रिवाइज करोगे बताओ जरा. क्या रिवाइज करोगे? इकोनॉमिक्स कर लोगे कि ज्योग्राफी कर लोगे कि पॉलिटी कर लोगे, करंट अफेयर्स कर लोगे, क्या ही कर लोगे? और रिवीजन कितना काम आता है आप लोगों को पता होगा. जिसने एक भी अटेम्प्ट दिया उसको पता होगा कि एग्जाम के ठीक 2-3 दिन पहले जो आप पढ़ते हो वो बिल्कुल काम नहीं आता है. हालांकि कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिनके काम आ जाता है कभी कभी, बट वो संख्या बहुत कम है. ठीक है ना? तो वैसा नहीं कर रहा है. यूपीएससी एग्जाम इज नॉट अबाउट द स्टडी बिफोर 2 days, 3 days, 5 days. एक वीक पहले से भी फ्री रहोगे, अच्छा एग्जाम में करके आओगे अगर आपकी फाउंडेशंस पे कमांड अच्छी है. ठीक है ना? चलिए, now we are coming to the second committee, Hartog committee. Right, this Hartog committee also important for exam. Hartog committee is also important for exam. ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. Hartog committee 1929. Hartog committee. Now इसकी कहानी क्या है Hartog committee की? Okay, so there was a Simon commission that was set up in the year 1927. Clear? And what was the task of Simon Commission? Simon Commission का task क्या था पहले ये समझो. So previously there was a act, that is the Act of 1919. इसके पहले एक act है, that is what? Act of 1919. And there was a provision in this act. और वो provision क्या था? At the end of every 10 year. Okay. This act is what? This act was like future. Okay. Constitution और legislative reforms for India. 1919 का एक्ट आया तो इसने ये तय कर दिया कि आने वाले 10 years तक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, लेजिस्लेटिव वर्क्स कैसे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होगा. So this was very much important. So this act came, but there was a provision कि on every 10 year, okay, this act will be reviewed. And what was the need for the revision? 10 years पे रिवीजन किया जाएगा, तो इस रिवीजन का नीड क्या है? What is the need? नीड क्या है रिवीजन का? आप खुद बताओ. 10 years पे आप रिव्यू करोगे, it means that there are nationalist demands between this period. 1919 के बाद मूवमेंट्स भी होंगे, लोगों के नेशनलिस्ट डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस भी होंगे, तो उन सबको एकोमोडेट किया जाएगा. या यहाँ जो वीकनेसेस होगी, इस वीकनेस को क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा. तो टेक्निकली फॉर रिव्यू एंड री एग्जामिनेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1919 कमिटी कब बननी चाहिए? 1929. बट ड्यू टू द इलेक्शंस इन ब्रिटेन दिस कमिटी वाज फॉर्म 2 years अर्लियर. ये कमीशन कब बन गया? 2 साल पहले, 2 years earlier, 1927. ठीक है? This is known as Simon Commission. And Simon Commission had to give recommendations.
And recommendations will be important because the recommendations will be like future like it will be like the future legislation or draft for India. हिंदुस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा ये तय करने वाला था साइमन कमीशन। अच्छा, पॉलिटिकल फ्यूचर में एजुकेशन भी आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। 1919 में भी तो एजुकेशन के बारे में बताया गया। So in the same way, Simon Commission will do what? Simon Commission will set up an auxiliary committee. ठीक है कि भाई एजुकेशन वाला चैप्टर तुम कर लो, एजुकेशन का रिव्यू तुम कर लो, तुम हमें बता दो, और फिर हम क्या करेंगे अपने रिकमेंडेशंस में उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो फॉर दिस पर्पज साइमन कमीशन डिड व्हाट? साइमन कमीशन सेट अप एन ऑक्सिलरी कमिटी, राइट? दिस Simon Commission set up an auxiliary committee. Okay, and the chairman of this committee was Philip Hartog. The chairman of this committee was Philip Hartog, and that's why this is called Hartog Committee. The chairman of this committee was Philip Hartog, and that's why this committee is known as Hartog Committee. And this committee had to prepare a report on education. Clear? Everything. It will review the education system in India. And this is what Hartog Committee. And what is the year of this Hartog Committee? The year is 1929. Many a times the questions are asked to correctly match also. Correctly match format में भी होता है। देखो एजुकेशन सिस्टम का एनालिसिस आई विल डिस्कस, बट द कंक्लूजन और एनालिसिस आई विल डिस्कस व्हेन आई विल फिनिश ऑल द टॉपिक्स। लास्ट में हम एक क्रिटिकल डिबेट करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया was it a reflection of one of the horrors of colonialism? Clear? इसमें प्रोग्रेसिवनेस क्या है, डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, we will discuss this part also. Got it? Now we are moving ahead. What is the next development here? ये हैंग हो गया, it will take 2 minutes of time, please wait. अमित, इंक्लूड किया क्या? ठीक था?
क्या? हम्म। हम्म। बताओ बताओ, धीरे बोलो, बताओ, तो बताओ, बात बताओ। ऑफ कर दिया। Am I audible now, Vipin? Okay. 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 So let's discuss. So we were discussing Hartog committee, right? And Hartog committee, the basic idea now you are familiar that it was a auxiliary committee. Simon Commission set up in the year 1927, and this Hartog committee was an auxiliary committee of this Simon Commission. Clear? Okay. And the task that was given was to review the education system in India and give further recommendations so that
the recommendations could be applied. So first important thing is that, okay, it recommended what? Diversion of more boys to the industrial and commercial career at the end of the middle stage, where they should be prepared for specialized education in the technical and industrial schools. It means that, okay, industry or skill based education should be promoted so that students could get the job opportunities. This is one point. Okay, and it also reviewed the other problems that were related to the training of teachers, okay, and the service conditions of the secondary teachers. Okay, write some point here. Hartog committee में write point 1. Okay, पहला point तो यही हो गया, right? Recommendation that skill based education must be given, so that skill based education must be given so that the students fulfill could fulfill the specialized needs of technologies and industries. The students could fulfill the specialized needs of technology, industry, and other commercial businesses or other businesses or enterprises. Specialized needs, specialized education. एक बात याद करो, in classes I've already discussed with you that from the 1813, I have already divided three phases: 1757 to 1813, 1813 to 1858, 1858 to 1947. This was the age of फाइनेंस कैपिटलिज्म था, नए बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहे थे, यस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, सिप्ला, गोदरेज, मेनी कंपनीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब आ रही है। तो बताओ, बैंक्स को भी एक स्पेशलाइज नीड्स चाहिए, इंडस्ट्रीज को भी एक स्पेशलाइज नीड्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे वो नई डिमांड्स जो है इकोनॉमी की, उन डिमांड्स को फुलफिल कर सके। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, राइट? रिकमेंडेशन नंबर 2, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन, ओके, more attention. Primary education should be given more attention. Primary education should be given more attention. This is the second recommendation, that primary education should be given more attention. अब देखो यहाँ पे क्या है, at that time Gandhi and other nationalist leaders were asking that primary education should be made compulsory by the British government. अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन को जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपलसरी बनाएगी, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, और इंडिया इज अ कॉलोनी, तो ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहते, दे आर बेसिकली बिजनेसमैन. सो व्हाट द रिकमेंडेशंस विल से, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी और नॉट कंपलसरी? नॉट कंपलसरी. कहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बट अभी कंपलसरी बनाए जाने की जरूरत नहीं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट. अब प्रीलिम्स एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गया. कॉमन सेंस, कहाँ कंपलसरी था आजादी के पहले? था ही नहीं, कभी नहीं था. तो कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो. राइट दिस पॉइंट, दैट द कमिटी सेड दैट there is no need to make primary education compulsory in India. There is no need to make primary education compulsory in India. Okay. There is no need to make primary education compulsory in India. प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाए जाने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर क्लास 8 मस्ट बी encouraged. Vocational courses after class 8. वोकेशनल कोर्स को प्रमोट करोगे तो आप किसकी नीड्स को फुलफिल करोगे? इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफिल करोगे. So that's why vocational courses should be promoted after class 8. Right, next point. Okay. अब अगली कहानी क्या है, ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कम बच्चों को एडमिशन दिया जाना चाहिए, ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, राइट? आप यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बना दो. और ये ईयर क्या है, 1929. 1929 में क्या हो रहा है, सेकेंड मास मूवमेंट की तैयारी हो रही है. 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ चुका है, और यूनिवर्सिटीज जो हैं और कॉलेजेस वो क्या होंगे, सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज. What Hartog committee is saying is very interesting. Committee is saying that, okay,
to improve the standards of education in universities, admission should be restricted. अब आपको समझ में आया कॉलोनियलिज्म क्यों है, हॉरर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म क्यों है? मेरी बात समझ गया ना? So write this point that the committee suggested that for for improving the standards of university education, the committee suggested that for improving the standards of university education, the committee suggested that for improving the standards of university education, for improving the standards of university education, improving the standards of university education, admissions in the universities should be restricted. Admissions in the universities should be restricted. Universities. Admissions in the universities should be restricted. Got it? That is one of the most important recommendation. Got it? Now, this is one idea. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. Now we are coming to the next development. The development that I am going to discuss with you, okay, is also an important part for prelims question. ये भी prelims का एक important question. Okay, तो Gandhian model of education हम बाद में discuss करेंगे, but here this reference comes. That's why I am discussing with you. That is a very important part. Read this. Okay, Vardha. Okay. Vardha scheme of education. Vardha scheme of education. That is a very important topic. Vardha scheme of education. What is this Vardha scheme of education? Clear? So write this. ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अक्टूबर 1937, राइट? 22 to 23rd October 1937. 22 to 23rd October 1937. ये 1937 की बात है. Dates you don't need to remember. अक्टूबर 1937 की बात. आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी वाले डेट मंथ याद कर लें. अक्टूबर 1937. यूपीएससी वाले मंथ नहीं याद कर सकते, उनको ईयर से काम चल जाएगा, ठीक है ना? राइट? अक्टूबर 1937. आईबी वाले क्या याद कर ले? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर. ठीक है, एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग है डेट्स. तो आप बस इतना याद रखो 1937. 1937 में क्या हुआ? राइट दिस पॉइंट. ओके, a conference on national education was a conference on national education was convened. A conference on national education was convened, okay, at Wardha. ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ नेशनल एजुकेशन का? So it was convened at Wardha. A conference on national education was convened at Wardha. Okay, and right purpose. Okay, purpose. Okay, to present a model for to present a model for to present a model for future education system in India. This was the purpose. To present a model for future education system in India. ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गांधी के आइडियाज से जोड़ के, बट गांधीज आइडियाज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब यहाँ पे देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रही है. ओके, सो दिस कमिटी वाज फॉर्म्ड, कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड. अब देखो इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस होगा, व्हाट विल बी डिस्कस्ड हियर. सो प्रीवियसली गांधी हैज रिटन a few articles in Harijan, and these articles were about what model should we follow in the education system and practices. गांधी ने पहले से इस पे कुछ आर्टिकल्स लिख रखे थे. So write this point. Okay, articles written by Gandhi. Articles written by Gandhi in Harijan. Articles written by Gandhi in Harijan. Harijan was a weekly paper started by Gandhi, and Gandhi wrote some articles in Harijan about okay, about future education system in India. Future education system in India. Gandhi has written some articles in weekly Harijan about the future education system in India.
फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए इंडिया में, इस पे इन्होंने लिखा था. गॉट इट. ओके. राइट वन मोर पॉइंट दैट ओके it was क्या लिखा था, हाँ, it was a series of articles written by Gandhi. Write one more point here that Gandhi advocated that Gandhi advocated that English system of education had created Gandhi advocated that English system of education had created a permanent gulf between English system of education had created a permanent gulf between okay uh, between elite group of Indians bracket में लिखे ना who are English educated and between elite group of Indians who are English educated and majority of the masses who are ignorant of English and majority of the masses who are ignorant of English and majority of the masses who were ignorant of English. यानी जो समाज में अंतर पैदा किया है वो किसने पैदा किया है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. जो इंग्लिश जानता है वो अपने आप को क्या समझता है, अलग, राजा बाबू. जो इंग्लिश नहीं जानता उसको वो क्या समझता है, गंवार समझता है, जबकि ये बेवकूफी है. इंग्लिश इज ओनली अ लैंग्वेज, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. नोइंग इंग्लिश डज नॉट सर्टिफाई दैट यू आर अ स्कॉलर. मेरी बात समझ गया ना. कई तोते इंग्लिश में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, 2 घंटे की क्लास के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता क्या बोल के चला गया. क्लियर. सो व्हाट शुड बी डन व्हेन अ टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स इन इंग्लिश मीडियम. थोड़ी हिंदी बोल ले, थोड़ी तमिल बोल ले, थोड़ी तेलुगु बोल ले, क्राइम कर दिया क्या, बताओ. एक्सेंट क्यों अमेरिकन नहीं होनी चाहिए, क्यों ब्रिटिश होनी चाहिए, हम अपने इंडियन स्टाइल में इंग्लिश बोलेंगे भाई. ठीक है, जिसको नाराज होना हो जाओ. गॉट इट. ठीक है. तो ये बात गांधी ने कही, कहा कि इंग्लिश हैज क्रिएटेड अ गल्फ between a few group of Indian people who consider them that we are elite class. Okay, a majority of Indians who are the masses. ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लैंग्वेज का, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें. लैंग्वेज इज फॉर वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन. If I ask you what is the sagacity seems to prosecute the vertical system, नहीं समझ में आया ना. आई एम आस्किंग व्हाट इज योर नेम. तो इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, ऐसी. व्हाट इज योर नेम. मेरी बात समझ गया ना. ओके. सो द लैंग्वेज मस्ट बी वेरी सिंपल. बट यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो चुका है, लैंग्वेज हैज बिकम अ मीडियम ऑफ creating cultural division and cultural gap. Right, one more point that Gandhi had also written that Gandhi had also written that Gandhi had also written that all the money that all the money that the British government had spent, all the money that the British government had spent on the promotion of primary education was wasted. It was meaningless. All the money that the British government had spent on the promotion of education or the primary education is wasted. Meaningless. Why meaningless? क्योंकि आपने प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करते करते अगर लोगों के दिमाग में ये बात भर दी कि इंग्लिश बोलना ही स्कॉलर होने की निशानी है, तो कोई उसका मतलब ही नहीं रहा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन व्हेन सच इलिटिस्ट मेंटालिटी इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी. अगर ऐसी इलिटिस्ट मेंटालिटी है सोसाइटी में तो मतलब क्या है इस चीज का. गॉट इट. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड गांधी विल से दैट if administration will not accept those students who are coming from the villages or the small towns, what is the meaning of such kind of administration? That administration is also representing an elite class only. एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका, गांव से आने वाले, सेमी अर्बन एरिया से आने वाले बच्चों का. तब सही हिंदुस्तान को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे. आज यूपीएससी की एग्जामिनेशन में क्या है, ठीक है, बताओ. देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन. बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें एक सामान्य से सामान्य बच्चा गांव से आने वाला वो भी इस एग्जाम को क्लियर करता है. दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम, दैट वन इज टॉपर फ्रॉम द टॉप आईआईएम एंड आईआईटी इंस्टीट्यूशंस
and you will find that the another student who has also got, this might be possibility that the first ranker coming from the villages, होता है ऐसा, ठीक है, बाकी लोग IITians IIMs वाले अच्छी रैंक के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरियन है, बट वी सी दैट वी टुडे रिप्रेजेंट व्हाट, विलेजेस आल्सो, एडमिनिस्ट्रेशन में सबकी रिप्रेजेंटेशन, गांधी ने कहा ये नहीं होना चाहिए. And this conference which was held at Wardha, what was the basic purpose? That we have to design a future model of education in India where all such problems or concerns should be addressed. ठीक है, and taking in view the Gandhi's opinion. यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें एक नया मॉडल तैयार करना था एजुकेशन के लिए, बट इस नए मॉडल में किसके ओपिनियन को ध्यान में रखना था, गांधी के ओपिनियन को ध्यान में रखना था. तो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन was basically based on what, Gandhian model of education. Now a committee was formed this for this purpose, and Dr. Zakir Hussain, right, this ये prelims का बहुत important concept बता रहा हूँ. A committee was formed for this purpose, and Dr. Zakir Hussain was made the chairman of this committee. A committee was formed, and Dr. Zakir Hussain was made the chairman of this committee. Chairman of this committee. अब देखो क्या है, अक्टूबर 1937 में ये कमिटी बनी है, एंड इन दिसंबर 1937 द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. तो कमिटी ने अपना रिपोर्ट कब सबमिट कर दिया, विद इन 2 months, राइट दिस, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months. द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months. द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स विद इन 2 months. कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months. 2 month के अंदर कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखो, अक्टूबर 1937 द कमिटी वाज फॉर्म्ड, दिसंबर 1937 द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, एंड नाउ इलेक्शंस ऑफ 1937, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ये मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा डिटेल में, यहां मत पूछना अभी आप लोग, ठीक है ना. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ऑल दिस आई विल डिस्कस इन डिटेल. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज in provinces, and what we see, 1939 when the World War II starts and the British government announced that India is a party with Britain in Second World War, and it did not ask for the Indian opinion, what will happen, the Congress ministries will resign. तो इस मॉडल पे तो आप काम कर ही नहीं पाए, ठीक है. इस मॉडल पे किसको काम करना था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को काम करना था, बट हियर व्हाट हैपेंड, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन. गॉट इट. तो ये डेवलपमेंट, ठीक है ना. तो यू कैन राइट हियर दैट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज okay, resigned in 1939. The Congress ministries resigned in the year 1939. Okay, ब्रैकेट में लिख लेना वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट. हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल, बाद में बताऊंगा आपको दूसरे टॉपिक में. वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड, वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. अब देखो, अगर आपने पहले से गांधी का मॉडल ऑफ एजुकेशन पढ़ा है, तो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, यू कैन इजीली गेस, आप गेस कर सकते हो. बट चूंकि आपने पढ़ा नहीं है तो कुछ पॉइंट्स लिख लो. गांधी आई विल डिस्कस, राइट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन. द रिकमेंडेशंस आर नोन बाय द नेम ऑफ व्हाट, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, राइट दिस. द रिकमेंडेशंस are known by the name of Wardha scheme of education. Recommendations को इसी नाम से जानते हैं, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन. क्या क्या होगा इसमें, राइट, पॉइंट वन, ओके. टीचिंग थ्रू हिंदी फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 to standard 7, फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 to standard 7, ठीक है. Teaching in Hindi from 2 to standard 7, right. Second point, okay. Standard 8 onwards, teaching in English. Standard 8 onwards, clear, teaching of English. Standard 8 onwards, teaching of English, right. Next point, first 7 years of schooling, first 7 years of schooling, bracket में close, should be free and compulsory nationwide. First 7 years of schooling should be free and compulsory
nationwide. Free and compulsory nationwide. Right, next point. To introduce basic handicrafts in the syllabus. हैंडीक्राफ्ट लाने से क्या होगा? पर्पसफुल एजुकेशन, आप स्किल में एक्सपर्ट हो जाओगे. ठीक है, टू इंट्रोड्यूस बेसिक हैंडीक्राफ्ट इन द इंडस्ट्री. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा. लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज आई हैड टू डिस्कस गांधी सेपरेटली. गांधी आपके साथ अलग से डिस्कस करें. गॉट इट. गांधी ने कहा ऐसी एजुकेशन का मतलब क्या है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको सोचना पड़े कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. आज यही तो है एजुकेशन. वंस वी कंप्लीट एजुकेशन वी थिंक दैट काम कहाँ मिलेगा. गांधी सेड दैट सच काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट गुड. ठीक है, एजुकेशन का मतलब, गांधी के डेफिनेशन बड़े शानदार. गांधी ने कहा देखो एजुकेशन का मतलब एकेडमिक एजुकेशन नहीं है. ओके, दैट इज लिटरेसी. ओके, if you are academically graduate, postgraduate, doesn't mean that you are educated. A potter who is expert in making pottery is also educated. A person who is well cultured, living in the villages, is also educated. So education और literacy दोनों में फर्क है गांधी के अकॉर्डिंग. Okay, okay. So I will discuss Gandhi and you will know the differences. Now I am coming to the next part. Next development is seen in the form of Sargent report. Okay, this is the next topic, that is Sargent plan of education. Sargent plan. Okay. In 1944, this person was the educational advisor of government of India. The name of this person was Sir John Sargent. He was the, okay, read this, educational advisor. He was the Sir John Sargent. Sir John Sargent was the educational advisor. That's the important part. That he was the educational advisor of the government of India. Educational advisor. John Sargent was the educational advisor. Clear? Educational advisor. Okay. He worked with Central Advisory Board of Education, and now he was given, okay, a task to recommend measures to bring reforms in the system of education. ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी सार्जेंट को. सार्जेंट ने जो रिकमेंडेशन दिए, उस रिकमेंडेशन में उसने कहा कि in the coming 40 years, if we will follow this model in India, okay, the education system will be at par with the British education system, and Indians will be equally educated as British are in the coming next 40 years. अगले 40 साल तक अगर इसने मॉडल को फॉलो कर लिया तो ब्रिटेन और इंडिया दोनों एजुकेशन में क्या होंगे? एक बराबर होंगे. लेकिन उस मॉडल को फॉलो करने के लिए अगले 40 साल तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा ना. कितने चालाक हैं, कह रहे हमारी सरकार रहने दो, तब अगले 40 साल में इंडिया को ब्रिटेन बना देंगे. उसके लिए सरकार रहेगी उनकी, तभी तो बनाएंगे इंडिया को ब्रिटेन. सो दे वर वेरी स्मार्ट. 1944 में क्या हो चुका है इसके पहले? क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, पॉलिसी ऑफ कैरेट. बेटा अगले 40 साल में हिंदुस्तान को ब्रिटेन बना देंगे. ठीक है, ऐसा मॉडल लेके आया है सार्जेंट. हमने कहा नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दो. क्विट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़ो और जाओ. वी इंडियंस विल डिसाइड अबाउट आवर फ्यूचर. ओके, हम इंडियंस डिसाइड कर लेंगे अपने फ्यूचर के बारे में. अभी भी टाइम है, भाग जाओ, नहीं तो मार के भगा दिए जाओगे. इस अप्रोच में थे इंडियंस. और सार्जेंट हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था अपने प्लान से. दैट वाज द सार्जेंट प्लान 1944. क्लियर? सो राइट दिस पॉइंट. ओके, Sargent gave recommendations. Sargent gave recommendations here, and Sargent and Sargent report said that, okay, Sargent report said that in the next 40 years, Sargent report said that in the next 40 years, in the next 40 years, okay, India will have, in the next 40 years, India will have the same standard of
educational attainment that Britain has. In the next 40 years, India will have the same standard of education that British has. नेक्स्ट 40 years, ठीक है, सेम स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, राइट, एग्जाम्पल ऑफ रिकमेंडेशन। और वह यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि आफ्टर 3 years ब्रिटिश विल लीव इंडिया, हिंदुस्तान से चले जाएंगे, तो बेसिकली द क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट द प्रोविजन पार्ट, इट इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, कब आया, क्यों आया, दिस इज द मेन पर्पस, राइट। रिकमेंडेशंस में पॉइंट 1, ओके, प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 to 6 years एज ग्रुप, pre-primary education for 3 to 6 years age group, pre-primary education for 3 to 6 years age group, कि इंडियंस खुश हो जाए, ठीक है, कि यहाँ भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, 3 to 6 years प्री प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा, पहले क्या कह रहे थे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं, पहले क्या कह रहे थे, जरूरी नहीं है, अभी क्या कहेंगे, ध्यान से देखना, कहेंगे हमारी सरकार बनी रहने दो। अगला पॉइंट क्या है, रेड दिस, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 11 year एज ग्रुप। अब कहानी समझ गया ना, दे आर ट्राइंग टू अपीज यू, 6 to 11 year, ओके, एज ग्रुप, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, free and compulsory education, and right, 11 to 17 year high school education, 11 to 17 years high school education। मतलब आप खुश हो जाओ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर रह गई ना, इंडियंस कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कहेंगे यार रहने दो यार अंग्रेजों को, ठीक है। 11 to 17 year, ओके, हाई स्कूल एजुकेशन, राइट, नेक्स्ट, ओके, 3 years यूनिवर्सिटी कोर्स, 3 years यूनिवर्सिटी कोर्स, ठीक है। और क्या होगा, academics, technical, vocational, all these education will be given, right this, okay, humanities, science, technical, commercial, okay, all such education will be given, सब दिया जाएगा इंडियंस को, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरीज विल बी सेटअप, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। so they try to appease Indians that we are going to do this, got it। this is British education system in India। now in next class what we'll discuss, पहले बता दूं आपको, in next class we will discuss about, okay, Gandhi's model of education in detail। I will discuss in detail for a purpose, because whatever I will discuss you are going to use it in essay writing, clear। so I will discuss in detail, I will discuss Tagore's model of education in details, then we will discuss what, a critical approach, that the policy that the British made in India regarding this development of education system, okay, इसके positive aspects क्या है, and what are the negative aspects, got it, colonial system of education के, and then you will find that you have a good understanding about education system in modern India। और इसी तरह से एक और टॉपिक आपको पढ़ना है एमसी में, और वो क्या है, एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, गॉट इट, education system in, okay, medieval India। now you have studied education system in modern India, ठीक है। गांधीज आइडियाज, टैगोर्स आइडियाज, सुभाष चंद्र बोस आइडिया, क्या बताओ आप एग्जाम में यूज नहीं करोगे इन कॉन्सेप्ट को, एग्जाम में थीम्स रिपीट होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। इन प्रीलिम्स आल्सो नाउ व्हाट यूपीएससी इज डूइंग, दे आर नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चंस, they are repeating the themes, in essay they are repeating the themes, in GS mains question they are repeating the themes, so what we should prepare, themes, not questions। from the questions, decoding questions means what, identifying theme in that question, and then writing your opinion about that particular thing, because you cannot prepare hundreds and thousands of answers for all the themes, clear। so you must have a clear format in your mind, if it's essay, if it's a GS mains paper, right। and in prelims how will you able to make smart guess, smart guess कैसे करोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कैसे स्मार्ट गेस कर लोगे, बताओ जरा। स्मार्ट गेस ब्लाइंड गेस नहीं होता है, स्मार्ट गेस इज अ गेस वेयर we use the concepts that we have studied, okay, the area that is explored, we use that in order to find the answer of a question,
वेयर वी डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना जिससे हम फेमिलियर नहीं है, दिस इज व्हाट स्मार्ट गेस। और व्हाट इज ब्लाइंड गेस? बी फॉर बजरंगबली, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ठीक है ना, ये ध्यान में रहे। गॉट इट? ओके, तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आई विल डिस्कस इन डिटेल गांधीज एंड Tagore's opinion. Okay. If you have any question, yes, Vipin, you are asking a question about municipalities, panchayats. I will discuss in detail. ठीक है, मैं वो बताऊंगा, रिपन बताऊंगा, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। प्रोविंसेस, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑल दिस आई विल डिस्कस सेपरेटली। गॉट इट? ओके, आपको एक टास्क मैं देता हूं, एंड व्हाट इज द टास्क? व्हेन आई विल फिनिश दिस टॉपिक, you will make a list of the names of programs and policies that are related to एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं केवल उनकी नेम्स, नॉट डिटेल्स। गॉट इट? माइनॉरिटीज के लिए क्या है, और ऐसे पूरा एक लिस्ट बना लो। ठीक है, जैसे स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, या जैसे विश्वकर्मा, और इस तरह की पूरी एक लिस्टिंग बनाओगे। ठीक है ना, और मॉडर्न इंडिया के आंसर्स में क्या करोगे? जोड़ लोगे। जब आप गांधी की बात करोगे, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करोगे, तो वहां पे अभी के गवर्नमेंट प्लान्स को भी रिफ्लेक्ट करोगे आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमिक हो जाएगा। सो यू विल मेक अ लिस्ट, दिस इज योर टास्क। ओके, कि आपको गूगल से इकट्ठा करना है। ठीक है, all the names of the programs and policies that are related to education. One more task you will do, that is your homework, and what is that? ठीक है, new education system in India। ठीक है, new education system in India, what are the core features, what are the core elements? ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी की, उसको भी आप प्रिपेयर करोगे, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स के साथ उसको क्या करोगे? अटैच करोगे। गॉट इट? राइट? सो इन टुमारो क्लास विल डिस्कस अबाउट गांधी एंड टैगोर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम।